Hey everyone, welcome back to our YouTube channel Learn with Sahira. Students, in this video we are going to see the complete and clear explanation of unit number 3 from business economics subject, which is for degree 5th semester BCom students. By watching this video you will be perfect with unit number 3 whatever the question they might ask you, you will be easily able to attempt the answer and you can score full marks from unit number 3. Already we have seen the complete explanation of unit number 1 and unit number 2. If you didn't watch those videos, go to our channel playlist Business Economics Semester 5. You will be finding that videos. Watch those videos. In this we are focusing on unit number 3. So students, watch the video till end, and if you are new to our YouTube channel Learn with Sahira, subscribe it for more videos, and don't forget to share this video with your friends too. Students, from unit number 3, first important question or topic is explain consumer surplus theory. How is it measured? First, let us try to understand what consumer surplus actually means. Consumer surplus is nothing but the extra happiness or the extra satisfaction a consumer gets when they buy a product for a price lower than what they were willing to pay. In simple words, let me explain you with an example so that you will come to know what exactly the consumer surplus means. Imagine you want to buy a notebook and you are ready to pay 80 rupees for that notebook. Okay, but the shopkeeper says that the notebook is only for 50 rupees. गेटिंग माई पॉइंट, 80 रुपीज आप देना चाह रहे एक नोटबुक के लिए. मैक्सिमम प्राइस है आपका कि मैं ये नोटबुक 80 रुपीज में लेती एंड यू आर ऑल्सो विलिंग टू पे. लेकिन शॉपकीपर ने क्या कहा, 50 रुपीज में ये अवेलेबल है, 50 में आपको मिल जाती. सो 80 minus 50, how much it is it is 30. So 30 is not your money profit it is satisfaction profit. The extra satisfaction is called consumer surplus. तो ये 30 रुपीज जो है वो आपका कंज्यूमर सरप्लस है. एक प्रोडक्ट आप इतने अमाउंट में खरीदना चाह रहे लेकिन उतने अमाउंट से भी कम अमाउंट में अगर आपको वो प्रोडक्ट मिल जा रहा, तो जितना भी आपका एक्सपेक्टेड माइनस रियलिटी का जो अमाउंट है उसको बोलते कंज्यूमर सरप्लस. मतलब इजी वर्ड्स में बोले तो जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है उसको कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं. तो जो चीज हम महंगे में लेने के लिए रेडी है लेकिन वो आपको सस्ते में मिल जा रही, तो जो एक्स्ट्रा खुशी आपको मिलती है उसको बोलते कंज्यूमर सरप्लस. ओके, व्हाई डज कंज्यूमर सरप्लस हैपन ये क्यों होता? we have a value for a product. Okay, so we value a product more. वैल्यू रहती है एक प्रोडक्ट को और उसकी वैल्यू आपकी नेसेसिटी में भी ज्यादा रहती, लेकिन अपन उसको क्या करते, कम पे करते. समझ में आ रहा? वो नीड है अपन को, कैसा भी लेना है लेकिन वो अपन को कम में मिल जा रही, तो अपन को ये कंज्यूमर सरप्लस होता. ठीक है, एवरी कंज्यूमर हैज डिफरेंट विलिंगनेस टू पे दिस डिपेंड्स ऑन हाउ मच दे नीड द प्रोडक्ट, हाउ मच satisfaction they expect, how urgent their need is and their income and taste. But the market price is same for everyone. Market price same रहता सबके लिए. So some people get more surplus more because they will get it in more less amount, but everyone who is willing to pay more than market price enjoys some surplus. Okay, so students, let us try to understand it with the help of an example. Imagine you are thirsty. Okay, thirsty on a hot day. बहुत गर्मी है, आपको प्यास लग रही एंड यू वैल्यू द फर्स्ट बॉटल ऑफ वाटर वेरी हाईली, मे बी रेडी टू पे 40 रुपीज एंड द सेकेंड बॉटल यू मे पे ओनली 25. फॉर द थर्ड बॉटल यू मे बी पेइंग ओनली 15. समझ में आ रहा? फर्स्ट में आप बहुत प्यास लग रही है, आपको बहुत गर्मी है, तो आप कितना भी अमाउंट देना चाह रहे, लाइक आप 40 रुपीज भी देना चाह रहे बॉटल के लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा, आप ज्यादा पे करना चाह रहे, एक्सपेक्टेशंस आपके ज्यादा है. लेकिन जब सेकंड बॉटल है, आप ऑलरेडी एक बॉटल पानी पी लिए, तो अब थोड़ा नीड कम हो गई, तो आप 40 नहीं देते उसको, खाली 25 में वाटर बॉटल होना आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप पिए पानी. सो दैट विलिंगनेस गॉट डिसअपियर्ड. देन लास्ट थर्ड बॉटल के लिए तो 25 भी नहीं, 15 में दे दो मेरे को वाटर बॉटल बोलते. सो बट द शॉप प्राइस इज 10, सो 5 रुपीज आपको जो मिल रहा एक्स्ट्रा, वो क्या है, आपका कंज्यूमर सरप्लस है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ द कंज्यूमर सरप्लस इज मेजर्ड. I hope you understood this.
दैट इज नथिंग बट ऑल दैट अबाउट कंज्यूमर सरप्लस, वो कैसे अपन को डेली लाइफ में देखने को मिलता। Now let us talk about the measuring consumer surplus methods. So first one is individual consumer surplus method. Ma this is the simplest method. आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने लिखा है डिफरेंस बिटवीन विलिंगनेस टू पे एंड एक्चुअल प्राइस फॉर ए सिंगल कंज्यूमर। तो मैक्सिमम जितना अपन अमाउंट पे करने के लिए रेडी है दैट माइनस एक्चुअल प्राइस पेड, जैसे कि अपन यहाँ पे देखे थे 80 minus 50, so this is nothing but your individual consumer surplus. Okay, then total consumer surplus में जैसे कि मार्केट लेवल पे ये हो जाता, हियर वी एड द सरप्लस ऑफ ऑल कस्टमर्स इन द मार्केट। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल कस्टमर का देख रहे थे ना, यहाँ पे क्या करते हैं अपन टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल एक्सपेंडिचर करते, मतलब total utility means total satisfaction value ma, total expenditure means price into quantity. So this is the consumer surplus which is calculated on all the consumers whoever are available, like it is on market price ma. And next we have table method. This method uses a demand schedule ma, we take each unit, subtract price from willingness to pay and then add all the surpluses, ठीक है, using a demand schedule to calculate surplus for each unit purchased. Then we have area method, or we can also say geometrical method. So this uses a demand curve diagram ma. If the demand curve is straight line, the consumer surplus is half into base into height. Base मतलब quantity purchased, height मतलब difference between highest willing to pay and the market price. So this gives the shaded triangle area in the graph. So it is geometrical method. It looks a little difficult, but if you understand the concepts, you can write in your own words ma. Importance you can just have a look on the screen. It shows how much benefit consumer gets in a market, and it helps government decide tax and welfare policies, and business use it to understand customer satisfaction. Importance you can see. Limitations are also there ma. This theory has few limitations. We cannot measure satisfaction exactly. एग्जैक्ट कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो मेजर कर सकते हैं अपन, नहीं कर सकते. एंड इट अज्यूम्स मनी वैल्यू ऑफ सेटिस्फैक्शन इज कांस्टेंट. ओके, एंड दैट इज आल्सो रॉन्ग. नॉट सुटेबल फॉर जिपन गुड्स में, जो इंफीरियर गुड्स है उसके लिए ये काम नहीं करता, और अल्टरनेटिव्स अगर सब्स्टिट्यूट्स है तो उसको भी इग्नोर करता. अगर अपन देखे थे ना लास्ट यूनिट सेकेंड यूनिट में एग्जाम्पल की, अगर एक गुड का प्राइस ज्यादा हो गया तो अपन उसका सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव ढूंढ लेते. जैसे कि अगर टी का, चाय पत्ती का अगर प्राइस बढ़ गया तो अपन कॉफी खरीदते, कॉफी का प्राइस अगर बढ़ गया तो अपन चाय खरीदते. इन द सेम वे. Next, the topic is what do you mean by supply? Explain the factors influencing the supply. What does supply means ma? Supply means the quantity of a product that producers are ready to sell at different prices during a given time period. So supply demand mainly depends on willingness to produce and ability to produce, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. समझ में आ रहा? सप्लाई मा, सप्लाई मतलब बेसिक वर्ड है ना ये, आप सबको मालूम ही होगा कि क्वांटिटी, एक प्रोडक्ट का क्वांटिटी कितना प्रोड्यूसर्स डिसाइड करे प्रोड्यूस करने के लिए और उसका कितना अमाउंट लगा है उसको बोलते सप्लाई. एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते फार्मर का. ए फार्मर में बी विलिंग टू सेल 100 kg wheat at 25 rupees per kg, लेकिन 200 kg wheat at 30 पर kg. सो ये सप्लाई है, ठीक है. डिफरेंट प्राइसेस रहते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के. अब ये फार्मर को ये देख लो, 100 kg ऑफ व्हीट 25 में बेच रहा और 200 kg क्या है 30 में बेच रहा. समझ में आया? इसको बोलते सप्लाई, ठीक है. नाउ लेट इज हैव ए लुक एट द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई वर्सेस स्टॉक मा. स्टॉक मतलब क्या है मा? टोटल क्वांटिटी दैट इज सेलर हैज इंक्लूडिंग स्टोर्ड आइटम्स. जो भी गोडाउन में रखे हुए हैं, जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसको स्टॉक बोलते. सप्लाई मीन्स द पोर्शन ऑफ स्टॉक दैट द सेलर इज विलिंग टू सेल एट द करंट प्राइस. गोडाउन में वगैरह जो पड़े हुए हैं पूरे उसको स्टॉक बोलते हैं. सप्लाई मतलब कितने अमाउंट ऑफ स्टॉक को एक जो ओनर है या तो शॉपकीपर है बेचना चाह रहा है एक गिवन प्राइस पे, उसको बोलते सप्लाई. एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते.
Now let us have a look at the factors influencing supply में लॉ ऑफ सप्लाई का लॉ ऑफ डिमांड का अगर आपको मालूम है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, वो था लॉ ऑफ डिमांड में। यहाँ पे ऑपोजिट है, ठीक है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। समझ में आ रहा? अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई भी इंक्रीज होता, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो सप्लाई भी डिक्रीज होता। लेकिन ये अपना लॉ ऑफ डिमांड में अलग था, अपन ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन देखे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई में फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इफ the price of a product rises, producers feels motivated to supply more because they want more profit. डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस है, आपको समझ में आया ना? अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा बढ़ गया तो प्रोड्यूसर्स जो है उन लोग का ज्यादा बेचना चाह रहे, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा प्रॉफिट होता ना माँ, बेसिक है ये तो। अब मैं एग्जाम्पल, चॉकलेट्स बेचना चाह रही, चॉकलेट्स का अगर अमाउंट ज्यादा हुआ, उसकी प्राइस बढ़ी, तो मैं ज्यादा बेचती ना। क्यों? क्योंकि मेरे को ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। इन द सेम वे हियर, नेक्स्ट prices of related goods, producers always compare profits ma. If another product gives more profit, they shift their production. Example, if cotton price rises ma, farmers may grow more cotton and less wheat. एग्जाम्पल, अगर कॉटन का प्राइस डिक्रीज हो गया, वीट का बढ़ गया, तो कॉटन को छोड़ दे तो ना वीट की तरफ चले जाते। क्यों? क्योंकि वहां से उन लोगों को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा। प्रोड्यूसर्स जो भी प्रोड्यूस कर रहे माँ, उनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उनका मेन अल्टीमेट गोल क्या है? उन लोगों को पैसे कमाना है, प्रॉफिट ज्यादा होना है। तो प्रॉफिट उनको ज्यादा कहाँ से आ रहा, वही चूज करेंगे ना उन लोग। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, if cost of raw materials, labor or machinery increases, producers pay less because profit reduces. And if production becomes cheaper, supply increases. This is as simple as that. Technology ma, better technology means faster production, less wastage and higher supply. Example, modern machines increase the supply of rice mills. है ना, machines को use करके production ज्यादा करते, supply ज्यादा होता। नेचुरल कंडीशंस में, जैसे कि अगर अच्छा रेनफॉल हुआ, खेती वगैरह करते से उन लोग को अच्छी रेनफॉल हुई, अच्छी खासी, ज्यादा नहीं, नॉर्मल जितनी भी नीडेड है उतनी रेनफॉल हुई, तो मोर सप्लाई रहता। वही फ्लड्स आ गए या तो ओवर बारिश हो गई तो क्या होता, पूरी फसल खराब हो जाती, लो सप्लाई हो जाता। गवर्नमेंट पॉलिसीज में टैक्सेस, टैक्सेस के वजह से भी सप्लाई इंक्रीज और नीचे होता। टैक्स अगर ज्यादा है तो सप्लाई डिक्रीज होता, टैक्स अगर कम है तो सप्लाई इंक्रीज होता। मा नंबर ऑफ सेलर्स, मोर सेलर्स इन द मार्केट, मोर सप्लाई, फ्यूअर सेलर, few supply, less supply. Okay, next, future price expectations. Why? If producers expect price to rise in the future, they reduce current supply to sell more later. आगे अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो अब उन लोग बेचना छोड़ देते, कम बेचते, फ्यूचर में ज्यादा बेचते, क्योंकि अब जितना प्रोडक्ट उन लोगों को बेच के जितना अमाउंट मिल रहा, उससे ज्यादा अमाउंट फ्यूचर में मिलने वाला है, तो इसलिए उन लोग फ्यूचर में बेचते। Transportation and communication ma, if transport facilities are good, producers can send products quickly. Okay, supply increases. Then time period, in short run, people cannot change easily because production capacity is fixed ma. So if long run, producers can expand factories and buy new machines also, here the supply increases. Students, let me remind you all, I have already made all subjects and languages important question and answers notes, which are very easy, simple and clear to understand, ready for quick exam preparation. बहुत कम टाइम में आप पूरे सब्जेक्ट, पूरे सिलेबस से परफेक्ट हो सकते हो और बहुत अच्छा आपका एग्जाम देके आ सकते हो। आई हैव जस्ट इंक्लूडेड इम्पोर्ट questions, damn sure important questions in the notes. If you want the notes, you text me on my Instagram. My Instagram ID is learn with Sahira, and you can also get my Instagram ID link in this video description. If you want the notes of damn sure important questions with easy, simple and clear explanation answers, then you can text me on my Instagram. Text want notes with your group and semester, but note payment is must. There is a little payment, very little payment, but definitely you will be seeing very big results. Okay, now let us talk about indifference curve and its properties ma. It is very much important and most expected question. Okay,
So first let us try to understand what is indifference curve ma. And indifference curve shows different combinations of two goods that give the same level of satisfaction to a consumer. Okay, getting my point? This curve shows different combinations of two goods that provide the same level of satisfaction to consumer. Means consumer is equally happy with the combination on the curve. This means the consumer is equally happy with any combination on the curve it is saying. They don't prefer one combination over another ma. Both give them equal utility. इनमें फर्क नहीं पड़ता माँ, दोनों कॉम्बिनेशन से उतनी ही खुशी मिलती है. Just example you can see on the screen. At point A, see here, let us say that a consumer likes tea and coffee. Okay, both also he likes. A consumer, मेरा ही example ले लो, मेरे को टीवी पसंद, मेरे को कॉफी भी पसंद. At point A आप देख सकते he has only one tea but 10 coffees. Point A पे वन ही टी लिया लेकिन कॉफी कितना है 10 कॉफीज. एट पॉइंट C 3 टी लिया और कॉफी कितना लिया 5. मतलब consumer is equally satisfied with all these combination ma. All these points lie on the one difference curve. Getting my point? One indifference curve. Equal of these gives equal satisfaction. Hence they form an indifference curve. Getting my point? कॉम्बिनेशन मा कौन सा भी कॉम्बिनेशन रहने दो उनको इक्वल हैप्पीनेस मिलता, तो लोग वो कॉम्बिनेशंस को प्रिफर करते. ओके, डायग्राम आप लोग देख लो, इसके प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे तो आपको इंडिफरेंस कर्व क्या है अच्छे से समझ में आएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व मा फर्स्ट इज downward sloping. This means if the consumer gets more quantity of one good, they must give up some quantity of other to maintain the same satisfaction. तो इसलिए डाउनवर्ड स्लोप रहता. इफ इट वेंट अपवर्ड इट वुड मीन द कंज्यूमर इज गेटिंग मोर ऑफ बोथ गुड्स बट स्टिल सेइंग ऑन द सेम सैटिस्फैक्शन लेवल विच इज इम्पॉसिबल. दो गुड्स है माँ, टी और कॉफी, ठीक है. अब टी उनको ज्यादा मिल रहा तो उन लोग क्या करते, कॉफी की जो क्वांटिटी है वो कम करते ताकि दोनों का सेटिस्फैक्शन वो ले सके. इसलिए हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहती इंडिफरेंस कर्व की. कॉन्वेक्स टू ओरिजिन मा, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन मीन्स दिस इज बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मा. MRS भी बोलते हैं अपन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. मतलब हाउ मच कॉफी वाई ए पर्सन इज willing to give up to get more of the tea which remaining equally satisfied. आपको अभी मैं एग्जांपल दी थी ना टी और कॉफी का, तो यहाँ पे कितना टी उन लोग दे देना चाह रहे कॉफी ज्यादा लेने के लिए, उसमें अपन को कॉन्वेक्स टू ओरिजिन मालूम होता. दिस मेक्स द कर्व बेंड इनवर्ड मा. यहाँ पे कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड था ना, यहाँ पे क्या है था इनवर्ड है था. शुरुआत में ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं बाद में कम मा. बेसिकली यहाँ पे higher curves represent higher satisfaction. If a curve is above and to the right of another curve, it means more of both goods, higher satisfaction. Then we have indifference curves never intersect. This is one of the most important property ma. Why this happens? Because if two curves intersect, it means the same combination of goods is giving two different satisfaction levels, and that is impossible ma, right? Next, indifference curves do not touch the axis. Means if a curve touches an axis, it means the consumer is consuming only one good and zero of other. पॉसिबल है कॉम्बिनेशन, इंडिफरेंस कर्व में ही कॉम्बिनेशन है. एक कॉम्बिनेशन मतलब एक प्रोडक्ट, वो कॉम्बिनेशन में से एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा कंज्यूम करके दूसरा असल कंज्यूम ही नहीं कर रहा, ऐसा हो सकता? इट इज नॉट पॉसिबल. Based on ordinal utility ma, ordinal utility means consumers rank satisfaction levels. Okay, they do not measure satisfaction in exact numbers. उन लोग रैंक करते, टी पीना या तो कॉफी पीना, टी पिए तो अच्छा रहता, कॉफी पिए तो अच्छा रहता, उन लोग रैंक करते. ठीक है. Indifference map ma, a group of many indifference curves is called indifference map. So each curve represents a different satisfaction level here.
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये क्या है? एमआरएस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कॉफी दैट ए कंज्यूमर विल सैक्रिफाइस टू गेट वन मोर यूनिट ऑफ टी व्हाइल रिमेनिंग इक्वली सेटिस्फाइड। समझ में आया? मेरे को कॉफी और टी में दोनों में से एक को सैक्रिफाइस करना है दूसरे को ज्यादा कंज्यूम करने के लिए, वही है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कंक्लूजन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व शोज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन. It explains how consumers balance between two products to maintain the same happiness. Okay, now the last topic is question number 4, which you can see on the screen, consumers equilibrium with the help of indifference curve analysis. So students, meaning of consumer equilibrium, it simply means the consumer is getting the maximum satisfaction from a limited income and given prices of two goods and has no reason to change their current consumption. अगर simple words में कहे तो कंज्यूमर को इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा खुशी मिल रही होती है, इससे बेटर कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं होता। समझ में आया? जैसे कि टी और कॉफी का एग्जाम्पल देखे अपन, वो कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, उसके अलावा दूसरा कॉम्बिनेशन वेस्ट है। तो जब अपन को क्या बोलते, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों होता माँ, एंड व्हाई इट इज द नीड फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट? बिकॉज व्हेन द इनकम इज लिमिटेड, या तो प्राइसेस आर फिक्स्ड एंड दे वांट अनलिमिटेड, so the consumer must to choose a combination that gives the highest satisfaction with the budget. Okay, so what are the different tools ma which are used here? What are the different tools which are used here in the consumer's equilibrium ma? First one is indifference curve ma, definitely. Indifference curves means this show satisfaction level, like higher curve hai to higher satisfaction milta. Then we have budget line ma, shows how much goods the consumer can afford. इसका एक फॉर्मूला है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं. दिस लाइन शोज ऑल कॉम्बिनेशंस द कंज्यूमर कैन बाय. ओके, and where does equilibrium happen ma? Equilibrium happens at at a particular point. Okay, that is known as tangency condition or the tangency point. This means the budget line is just just touches the highest possible indifference curve, okay, without crossing it and without going above it. So this tangency point gives maximum satisfaction. Okay, so मैं आपको बेसिक वर्ड्स में बोलती, थोड़ा कंफ्यूजिंग दिख रहा होगा ये। आप समझो आपके पास 200 रुपीज है, यू आर हैविंग 200 रुपीज, ओके, यू वॉन्ट टू बाई टी एंड कॉफी। 200 रुपीज में आपको टी भी होना, कॉफी भी होना। सो दीज आर so there are many combinations you want but only some combinations you can afford. समझ में आ रहा? आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होना, लेकिन आपके पास 200 रुपीज ही है, तो आप थोड़े ही कॉम्बिनेशंस को अफोर्ड कर सकते। योर गोल इज टू पिक द कॉम्बिनेशन दैट गिव्स द मोस्ट सेटिस्फैक्शन। समझ में आ रहा? बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है, उन कॉम्बिनेशंस में आप कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करते जो कि आपको हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन देता, वो बताना ही है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अपना इक्विलिब्रियम क्या है वो बताता, ठीक है। योर गोल इज टू पिक द कॉम्बिनेशन दैट गिव्स यू मैक्सिमम और द मोस्ट सेटिस्फैक्शन मा। सो थिंक लाइक, अब समझ लो एक जो एक पॉइंट है वो आपको कम सेटिस्फैक्शन दे रहा, ठीक है, और एक पॉइंट है जो आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा, और नेक्स्ट पॉइंट है आपको असल उस बहुत ओवर ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा। तो आपकी बजट लाइन क्या रहती, वो आपको ऐसे करना है जिससे आपके पास मनी लिमिटेड है लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होना। तो जब अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखते हैं, ठीक है। Okay, so this was the complete explanation of your unit number 3 ma. I hope this video was helpful. थोड़ा confusing है लेकिन समझो, consumer equilibrium is the point ma where the consumer gets maximum satisfaction, okay, और द बजट लाइन टचेस द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, और एमआरएस मतलब प्राइस रेशियो, और इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स एट दैट पॉइंट। एक रीडिंग दे दो, आपको समझ में आता। मैं नोट्स में बहुत इजीली एक्सप्लेन करी, ये सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स है जो मैं आपको यहाँ पे
स्क्रीन पे शो कर रही। नोट्स बहुत इजी और इन डिटेल है। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम लर्न विद साहिरा। ओके, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।